Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Physical and Chemical Changes of Matter. So my dear students, today I am going to give you a complete introduction of this unit. Here you can see all the student learning outcomes given on the first page of this chapter. जो कि हम इस पूरे चैप्टर में जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको. सो इफ आई इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर टू यू, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक. वी कम अक्रॉस मेनी चेंजेस एवरी डे इवन विदाउट नोटिसिंग देम, सच एज फ्राइंग एन एग, दैट इज अ रॉ एग चेंजेस इनटू अ सॉलिड वन. It is a permanent change. Making yogurt is a change. Crushing a can is a change. Dissolving sugar into water to prepare a drink is a change. All these changes are classified into reversible and irreversible changes. In this chapter, you will study the nature of different changes. So, my dear students, हम नोटिस नहीं करते, लेकिन हम डेली बेसिस पे जो अपने काम करते हैं उनमें हम कोई ना कोई मैटर की फॉर्म्स को जो है वो चेंज करते रहते हैं. जैसे आप रोजाना नाश्ता करते हैं, दूध का एक ग्लास पीकर आते हैं, दूध को गर्म करते हैं. अक्सर मदर ने आपकी दही बनाई होती है, आप दही खाकर आते हैं. इसके अलावा फ्राई एग, ऑमलेट और एनी टोस्ट, एनीथिंग दैट यू ईट, ये तमाम जो है इनमें कोई ना कोई चेंज होता है. सम चेंजेस आर परमानेंट, सम चेंजेस आर टेम्पररी, सम आर रिवर्सिबल, सम आर इरिवर्सिबल. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे. आप मुख्तलिफ चेंजेस जो हैं उनको कैटेगराइज करेंगे और आप उनके बारे में पढ़ेंगे, वेदर दे आर परमानेंट, दे आर टेम्पररी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. So my dear students, in the first lecture, the students will be able to identify observable changes in materials that do not result in new materials with different properties. So my dear students, first lecture में हम physical changes जो हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. And in lecture number 2, the students will be able to recognize that matter can be changed from one state to another, heating or cooling like candle wax. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है सेकेंड लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें बच्चे जो हैं वो ये जान पाएंगे कि कैसे जो है जब आप एक चीज़ को जो है वो हीट करते हैं तो वो अपनी मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है. तो इस बारे में हम पढ़ेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में आप दोनों तरह के चेंजेस पढ़ेंगे, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी. Then in lecture number 3, students will be able to describe and demonstrate the states of water, that is melting, freezing, boiling and evaporation and condensation. So my dear students, lecture number 3 में बच्चे water की different states के बारे में जानेंगे. In lecture number 4, the students will be able to describe and demonstrate the states of matter like melting, freezing, boiling and evaporation and condensation. Again, the same SLO will be repeated और बच्चे जो है इसमें boiling और condensation के बारे में पढ़ेंगे. Then in lecture number 5, the students will be able to identify the ways of accelerating the process of dissolving materials in given amount of water and provide reasoning, that is increasing the temperature, stirring and breaking the solid into smaller pieces increases the process of dissolving. So my dear students, इसमें जो है हम कैसे डिजॉल्विंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह आप जल्दी से चीज़ों को डिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. देन इन लेक्चर नंबर 6, the students will do an experiment number 3. Lecture number 7, distinguishing between strong and weak concentrations of simple solutions. इसमें हम solutions के बारे में और उनकी concentration के बारे में बात करेंगे. How a solution becomes strong and how it becomes a weak solution. Then in lecture number 8, students will be able to identify observable changes in materials that make new materials with different properties. For example, decaying, burning and rusting. So इसमें जो है हम observable changes जो है materials में वो note करेंगे और कैसे जो है मुख्तलिफ changes जो हैं वो properties को भी change कर देते हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे. In lecture number 9, the students will be able to differentiate between physical and chemical changes with examples. Lecture number 10 will be a project, that is project number 1 from your books. Lecture number 11 will be the review of this chapter, and in this chapter we will revise all the student learning outcomes, and then I will provide you with an assessment sheet to assess you to know that what you have learned from this chapter. So my dear students, we are going to enjoy a lot in this chapter. We are going to learn a lot of things from this chapter. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.